Everyone, welcome back to my YouTube channel Bitagama Classes. Yesterday we solved the all question of exercise 4.3 in quadratic equation, and today we are going to discuss about the exercise 4.4. So we have the next topic, nature of roots. If we have quadratic equation in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, and we know that the formula to find the roots of this equation is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. और अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमें दो अलग अलग रूट मिलते हैं. We get the two distinct real roots. Okay, minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, and second is minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a, right? So now in quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots or not. b square minus 4ac is called the discriminant of this quadratic equation. Okay, इस फॉर्मूले में हम b square minus 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, राइट. हमारे रूट को फाइंड करने की तीन कंडीशंस होती हैं. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है if b square minus 4ac greater than 0 then we get two distinct real roots. अगर b square minus 4ac 0 से बड़ा होता है तो हमें दो अलग real roots मिलते हैं. Second is if b square minus 4ac is equal to 0 then we get two equal real roots. ओके, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो हमें दो इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं. थर्ड कंडीशन है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता. तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं. वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट. इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हमें इसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं. देन वी नो दैट for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, where a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5. So we know that the discriminant formula d is equal to b square minus 4ac. Okay, so d is equal to minus 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 4 2 8 एंड 40. देन d इज इक्वल टू माइनस 31. इन दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0. So we know that if b square minus 4ac less than 0 then we get the no real roots. Okay, so no real roots is possible for this equation. This is the answer. And next question, 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. Then equating this equation with quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 3, b is equal to minus 4 under root 3 and c is equal to 4. And we know that the discriminant formula d is equal to b square minus 4ac. तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमें मिलेगा माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. ओके, इसे सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. So in this question we get the discriminant is equal to 0. हमारी सेकेंड कंडीशन थी कि if b square minus 4ac is equal to 0 then we get two equal real roots.
if as b square minus 4ac is equal to 0, then real roots exist for this equation, right? यहाँ पर हमें दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे, विच इज़ माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a. If we get two real roots minus b upon 2a and minus b upon 2a, then minus 4 under root 3 upon 2 into 3 is equal to 4 under root 3 upon 6. 2 and 3. 2 under root 3 upon 3, which is 2 under root 3 into under root 3. हम 3 को under root 3 into under root 3 लिख सकते हैं. Then final we get answer 2 upon under root 3. So the real roots two upon under root 3 and 2 upon under root 3. We have next question, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So equating this equation with quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. So we know that the discriminant formula d is equal to b square minus 4ac, d is equal to minus 6 square minus 4 into 2 into 3. So we get d is equal to 36 minus 24 is equal to 12, which is b square minus 4ac greater than 0. In this, if b square minus 4ac greater than 0, so therefore distinct real roots exist for this equation, right? So now x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, where minus 6 plus minus under root minus 6 square minus 4 into 2 into 3 upon 2 into 2. इस जब हम इसे सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4. यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो यहाँ से x के 2 रूट मिल जाएंगे. इफ़ वी टेक प्लस साइन देन वी गेट 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 एंड वी टेक माइनस साइन देन वी गेट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो हमने यहाँ देखा कि हमें x के 2 रूट मिल गए.